Hey, today's question is maximum matrix sum. This is POTD of today. And you are given an n cross an integer matrix. You can do following operation any number of times. Choose any adjacent matrix and multiply it by -1. We can choose anything adjacent -1 and consider it should border only. It can't be means diagonal. Okay. Only okay. Your goal is to maximize the sum of the matrix. I have noted down the key points like we can do horizontal swapping also of minus means multiply by -1. Vertically also we can do -1 multiplication of both the elements, and we can do any number of times these operations. We have to return the maximum sum of the matrix after multiplying each number, means after seeing the operations we have to maximize the sum of the matrix, and n is from 2 to 250. Okay, so what are the key observations of mine is okay, we'll see here. Let's suppose all on O is positive number and this is negative number. If there is no negative number, the sum will be sum of the matrix. Okay, sum of matrix. Okay, what if this color changes to green? That negative number. What we can do is like, okay, then sum will become this green plus this minus. Okay, but there is one condition. What if this number is smaller? What if any number is smaller than him? Means suppose this is smaller than him. Can he transfer to this number? Means if this number is smaller, we have to take this for maximizing this sum. We have to remove least, means we have to take least negative value na. Okay, suppose all for now all are positive number only, and we have given a one negative number to transfer to anyone to whom we will give whichever the value will be smallest one na. So suppose like this. So A B C D, so you have given -1 one time, and they will ask you to give any one of them to any of to them, and such that your sum is maximum. So what you will go to -1 A na, so because the A's value is very less. Okay, but let's suppose suppose A's position is for now here. Let's suppose A's position is here. Can from here he can travel from to here? So let's say we can -1 this one time and this one time, or we can do like this, one time -1 this both. The -1 will be transferred to this point, then -1 will be transferred to this point, like that. Or let's see if -1 is if our -1 is here and our smallest person is here. So what we can do, we can go like this, or we can do any operations. So we can transfer -1 from one part to any part now with these two operations. So we can transfer -1 anytime. So we can transfer -1 to any block. Okay, and so what we will take, minimum only. So we will transfer -1 to minimum 1. Okay, this is first conditions. What if there are two -1s?
Okay, what if there are two minus ones? Let's suppose let us suppose there are two minus ones. So we have seen that we can transfer any minus one to anyone. So let's suppose we will transfer this minus one to this, and we will cancel out by another options. So if two minus ones are there, we can simply cancel out and cancel out this minus one. So our sum will become only the positive one, means all the positive sum. Sum equals to absolute matrix sum. Okay, absolute matrix sum. Okay, so if even number of minus one is there, we can do absolute matrix sum only. If there are even count, then they will cancel out simply. And if we have minus one, we will take the smallest minus one. What if there are three? What if there are three minus ones? Means minus signs, negative numbers. Suppose A, B, C is there. So what we can do is we can remove any pair of values like AC, AB, BC, anyone, and the remaining only one will be remain with the minus one, A, B, C, and we will take the minimum of that. So our question is simplified in one case, like in the case like if we can see like here. So to which you will be taking from here only, tell me. You will always be taking the smallest sign to be as negative only ना, from here also, कि हम तो हमेशा नेगेटिव साइन के देखेंगे कि जो सबसे छोटा है उसी को हम हमेशा नेगेटिव करना चाहेंगे, तो हमेशा हम ए को ही लेंगे. तो हम यहाँ पे भी सबसे माइनस वन सबसे छोटा वाला ले रहे थे, ऑड में भी और इवन में भी. मीन्स माइनस वन जब हमारे पास एक माइनस वन था तो भी हम सबसे छोटे वाले को नेगेटिव रख रहे थे. अब यहाँ पे हमारे तीन माइनस वन है तो भी हम सबसे छोटे वाले को रख रहे हैं. वॉट इफ आगे से चार माइनस वन आ गए तो कोई ना, हमारे पास ए बी सी डी रहेगा, तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो वापस हमारे पास सम हमेशा एब्सोल्यूट सम ही लेंगे हम. एब्सोल्यूट सम मतलब हमेशा जैसे ए बी सी है -1 -2 -3, तो हम इसके एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 1 2 3 रहेंगे ना. एब्सोल्यूट मतलब मॉड्यूलस. ओके, मॉड्यूलस वैल्यू. तो लेट सपोज कि अब हमारा मैक्सिमम सम इफ काउंट इज नेगेटिव, मीन्स काउंट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर इवन रहा तो हमारे पास हमेशा सम ऑफ जो ये रहेंगे वो मैट्रिक्स का एलिमेंट रहेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स मॉड्यूलस. ओके, बट अगर से हमारे पास ऑड रहा तो हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट -mn क्यों लिए. सपोज हमारे पास ए बी सी डी ई एफ आई जी है, तो हमारे पास अगर से एक -1 है तो वॉट इफ हम क्या करेंगे -a देंगे, तो हमारा टोटल सम आना चाहिए -a + b + c + d + e + h + i. बट हम जब कैलकुलेट करते रहेंगे तब हमको थोड़ी पता रहेगा कि कौन सा एलिमेंट नेगेटिव है, इसलिए हम सबका सम ले लेंगे लाइक दिस, सबका एब्सोल्यूट सम ले लेंगे, माइनस इसको 2 बार कर देंगे ताकि हमारा पहले वाला जो ये रहेंगे वो ए को ये काट दे और एक ए बच जाए नेगेटिव. दैट्स वाई हम लोग 2 बार -7 कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे एक मिनट, चलो अब कोड देखते हैं. पहले हमने यहाँ पे क्या लिया, ये हमारा सम जो है वो एब्सोल्यूट सम ऑफ मैट्रिक्स है. ओके, मैट्रिक्स काउंट ऑफ नेगेटिव नंबर, ये हमारा मिनिमम स्टोर करेंगे मैट्रिक्स में, वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि अगर वो मिनिमम अगर वो ऐसा सेव करता था तो एक -1 रहता और बाकी दो, मतलब सपोज कि हमारे पास
अगर हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेंगे, मीन्स यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों ले रहे हैं, अगर हमारे पास 1 और -2 है, लेकिन हमको तो -1 को 1 को -1 करना था और इसको 2 करना था, तो इसलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये किया हमने, कुछ नहीं किया, हमने सम ऑफ सबके एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लिए, हमने मिनिमम को एब्सोल्यूट मिनिमम से कंपेयर कर लिया, और यहाँ पे नंबर ऑफ सिटी चेक कर लिए कि कितने नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स है। अगर से हमारे पास नेगेटिव नंबर्स इवन रह रहे तो हमारा सम डायरेक्ट रिटर्न रहा, अगर से ऑड हो रहा तो सम -m-n, क्योंकि हमने यहाँ से देखा कि क्या हो रहा। ओके, थैंक यू।